guys, welcome back to my channel. Thank you so much for supporting me, and for today's video I'm going to be sharing with you the review of Garnier Micellar Cleansing Water. But before that, उससे पहले मैं इतनी सज धज के क्या कर रही हूँ? There was a function and I thought of dressing up a little bit, so therefore I'm just dressing up a little bit. अभी क्विकली जंप करते हैं वीडियो पे। पहली बात तो ये कि आपको मेकअप क्लींजिंग बाम जो अवेलेबल है मार्केट पे उसको यूज क्यों नहीं करना है, क्योंकि इट कैन लीड टू ऑयली स्किन, इट कैन लीड टू ग्रीसी स्किन, it can clog your pores, and moreover it can lead to acne breakout on your skin. Micellar water क्या है? Micellar water is a perfect ingredient to remove dirt, makeup, oil from your skin while toning your skin. And Garnier Micellar Water is quite popular in Indian market, so I thought why not review it for you guys. For acne prone people, micellar water is far better than any sort of balm, any sort of creamy thing to remove the makeup or dirt from your skin. जैसे कि मैं हर वीडियो पे शुरू से बताती हूँ कि जब भी आप कोई रिव्यू देखिए तो प्लीज उस कंटेंट क्रिएटर की स्किन को डीप से जानिए। तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, क्योंकि उससे ही आपको एक रिव्यू का अच्छा प्रॉपर क्लियर आइडिया आएगा। प्रोडक्ट का नाम है गार्नियर स्किन नेचुरल्स का माइसेलर क्लींजिंग वाटर। इसका क्वांटिटी है 125 ml। इसका प्राइस है 199 इंडियन रुपीज। इसका जो डेट है वो है जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2025 तक, यानी 3 years। इसका जो क्लेम्स है वो है इट रिमूव्स मेकअप, क्लींजेस, सूथेस एंड नो रिंस ऑफ, एंड ऑल्सो इट इज फॉर बोथ फेस, आईज एंड ऑल्सो लिप्स। नो एडेड फ्रेग्रेंस, नो अल्कोहल, डर्माटोलॉजिकली एंड ऑप्थेल्मोलॉजिकली टेस्टेड। ये सूट करेगा इवन फॉर द सेंसिटिव स्किन पीपल। इसका कोई आउटर पैकेजिंग नहीं है, ये पूरा का पूरा ऐसे ही आता है। यू जस्ट हैव टू ओपन इट एंड pour it some on your cotton pad and you can definitely use it। जब ये नया नया आता है नॉर्मल से टेप यहाँ पे लगा होता है, उसको ही आपको खोल के ओपन करना है, अदरवाइज देयर इज नो एज सच पैकेजिंग ऑफ इट। तो यहाँ पे जो इसका क्लेम्स, नाम, इंग्रेडिएंट्स सब कुछ पीछे साइड पे साइड लिखा रहता है। आई नो यू कैन सी द फ्यू बबल्स आउट देयर, बट दिस इज जस्ट द माइसेलर वाटर। चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। Start with a clean hand. Pour some micellar water on cotton pad or balls. फिर स्किन पे 15 to 20 सेकेंड्स के लिए उसे होल्ड कीजिए, फिर धीरे से वाइप कीजिए। याद रखना, रब बिल्कुल भी नहीं करना है, हर्ष बिल्कुल भी नहीं होना है। फेस एंड अदर बॉडी पार्ट्स के लिए सेम ही प्रोसेस करना है आपको। पूरा बॉडी इसलिए बिकॉज आई अप्लाइड लिटिल बिट कंसीलर ऑन माई नेक एंड शोल्डर एरिया, ताकि जो मेकअप है वो नेचुरल लगे। अदरवाइज फेस पे पूरा अच्छा सा ग्लो कर रहा है और बॉडी डल है, ये अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी देखने में। इफ़ यू फॉलो मी देन यू नो दैट आई प्रेफर मिनिमल एंड नेचुरल ड्यूई मेकअप, सो इफ़ यू वांट टिप्स ऑन दैट कमेंट पे ज़रूर बताना। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू रिमूव मेकअप इन 3 steps, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बी वेरी मच जेंटल with the whole process and also be very much careful with the eyes. तो चलिए देख लेते हैं how I found this product. First of all, it easily removes makeup. You don't have to rub your skin and you will see your skin removing makeup much easily. दूसरा जो चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, both available online and offline market पे। तीसरा जो चीज better than makeup removing but amazing। जो चौथा बात जो मुझे अच्छा लगता है, इट्स वेरी अफोर्डेबल। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल हैव इट ऑन द डिस्काउंट इवन इफ यू गो फॉर द ऑफलाइन मार्केट्स एज वेल। ऑनलाइन पे तो ये बहुत ज्यादा और भी सस्ते पे मिल जाएगा। फिफ्थ थिंग दैट आई लाइक, ऑल द इंग्रेडिएंट लिस्ट इज मेंशन्ड यहाँ पे एक्वा का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। Sixth thing that I really like, made with 25% recycled plastic. This is a good step forward, but we have a long way to go in order to eliminate the plastic. Seventh thing that I like, it doesn't break me out, it doesn't cause me acne. Eighth thing that I like, that it is both dermatologically and ophthalmologically tested. And ninth thing that I like is that it has no fragrance and no alcohol. Alcohol can lead to dehydration of your skin, but I don't like. First of all, though it says कि ophthalmologically tested है, लेकिन I have experienced that मैं जब eyes पे remove करने के लिए इसको apply करती हूँ, it stings my eyes and I feel like eyes के लिए it's pretty much not the product.
Second thing that I not really like, not travel friendly at all, since it's a liquid and the cap is pretty much sturdy, but still sometimes it can open. Okay, so after using this, what I feel, it made my skin non-sticky, it made my skin non-oily, but at the same time not dehydrated, and it made my skin super soft. One tip, डू नॉट स्टॉप एट दिस. हाँ, ये माइसेलर वाटर है, अच्छे से मेकअप रिमूव करेगा, लेकिन ऑलवेज यूज a face wash after this to make your skin squeaky clean like this. This is perfect for the acne prone girls. This won't break you out, and my final verdict is you can go for it. Definitely this is one of the bestest makeup removing experience you will ever have, but be careful with your eyes, as I have already mentioned. So yeah, that was this video guys. Let me know if you have any queries in the comment box down below. If you found this helpful, share it with your friends and also like this video, subscribe to my channel. मैं मिलती हूँ आपको अपनी next video पे, तब तक के लिए stay safe, stay healthy and bye.